Prime Minister has reached Digital India and Digital Technology at Hotel Fairmont in San Jose. For the benefit of Indian people and the India-US economic partnership. So I'd like to thank everyone present, and especially the Prime Minister of India, for gracing this occasion. I'd now like to invite Shantanu Narayan of Adobe, a leading cloud service provider and a company which has its second largest development center in India, to take over the rest of the proceedings and conduct the thematic discussion. So please join your hands for Shantanu Narayan. Thank you for that introduction, Ambassador Singh, and thank you and the sponsors for putting this event together. It is clearly my great privilege to welcome Shri Narendra Modi ji, the Honorable Prime Minister of India. On behalf of everyone here today, welcome to Silicon Valley. It's an honor to have you here. A dynamic and development-oriented leader, the Prime Minister represents the dreams and aspirations of the people of India. His promise, Sabka Saath, Sabka Vikas, is a beacon of hope for all, and his vision is being realized in broad-reaching programs, including improving the financial inclusion through Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, promoting a cleaner India through Swachh Bharat, and creating skilled manpower and entrepreneurs through his Make in India program. As we hope to underscore this evening, the Prime Minister's Digital India initiative will transform India into a digitally empowered knowledge economy, something that we here in Silicon Valley are passionate about. We know that the digital economy has the potential to uplift individuals, businesses, and in fact, all of society. That is why we are all here tonight. When I left India 30 years ago, there was no advanced technology back home. We were fortunate to have close-knit families, good values, and a strong educational system, but our career prospects were limited. So like a lot of individuals in this room, we came to the US to go to graduate school. By contrast, Silicon Valley was growing rapidly and there was opportunity everywhere. The entrepreneurial spirit welcomed anyone with a strong work ethic and creative ideas. Today it would nearly be impossible to point to a Silicon Valley company here without finding some leaders, engineers, or business executives with Indian roots. That's no accident. Thank you. That's no accident, that's opportunity in action. In less than 3 decades, what was a weak link between India and Silicon Valley has grown strong, and it continues to expand every single day. We all know that India's embrace of technology has already changed its destiny, and unlike 30 years ago, today's college graduates enjoy an abundance of opportunity at home. With the internet bringing the world closer together, India is successfully competing in global markets with its greatest asset, its people. India is now an undeniable force in engineering, software development, as well as services. The objectives of the Digital India initiative lay the foundation for the next phase of innovation in every sector in the Indian economy, from government services to banking, from education to healthcare, mobile and beyond. This is the type of leadership and vision that India needs in order to flourish in the digital era. Our speakers tonight will paint a vision of how Digital India can be achieved, from smart network cities to data-driven business productivity to a more educated and informed population connected through affordable devices. It will also undoubtedly bring India and Silicon Valley closer together. At Adobe, we're pleased to support Digital India and India's transformation into a digital economy. We believe that digital transformation begins with people and not technology. And while most people know us for Photoshop or Acrobat, we understand that creative expression and mass communication
through magazines, websites, mobile applications is no longer sufficient. The interaction between business and customers, a school and its students, and a government and its citizens, that is what is going to drive success. To have an impact, businesses and public sector institutions must deliver highly customized, personalized, engaging experiences to every citizen. And in order to do that, they must understand what the individual person wants to accomplish, where they've been, and what they are trying to do. As India embraces the Prime Minister's Digital India vision, including the effort to digitally empower citizens through on-demand government services, there will be one powerful insight that emerges for everybody: know your customer. Citizens everywhere need easy access to information, clear understanding of their rights and responsibilities, and the ability to transact easily with every form of government. Paperwork and bureaucracy will hopefully become a thing of the past. I have witnessed the tremendous impact that citizen engagement initiatives can have in terms of reducing costs, improving efficiency, and when done right, enriching people's lives. And the Prime Minister and his team well understand the impact that digital transformation can have on India. I think they have a head start on precisely what needs to be done, and I'm confident that they will get there. I'm again delighted to be involved in this historic visit by the Prime Minister. It is a great honor to welcome you here to the Valley. But even more exciting is your vision for India, especially through the Digital India Initiative. And I look forward to seeing what this transformation will bring for every citizen in India. Our first speaker is one of the visionary leaders of Silicon Valley, someone who has clearly been at the forefront of technological change for several decades, John Chambers. As we all know, John is a highly accomplished executive with numerous awards to his credit, and he oversees the company's growth from just 70 million to well north of 47 billion. But what's even more exciting is the announcement earlier this week of John's election to serve as the next chairman of the US-India Business Council is a reflection of his commitment to India and the over 30,000 Cisco employees there. It is safe to say that John certainly believes in the vision of Digital India. Ladies and gentlemen, it's a pleasure to introduce John Chambers. Prime Minister Modi, all of us in the audience could not be more proud that you're with us tonight. You are an amazing ambassador for your country and what's possible in the world. And by being in our country, showing what's possible between our countries, showing what's possible between businesses in India and the US, and now in Silicon Valley, as every company becomes a technology or digital company, you send a message to the world on what's possible. I was asked to talk about the network or the internet. My parents were both doctors, but they taught me early on in life, education was the equalizer in life, but you had to be in the right country, the right state, the right city to really be able to benefit the full opportunity it gave you. With the internet in Cisco 20 years ago, we said the internet is now the second equalizer in life. And it suddenly began to break down the barriers, not perfectly, but in a large facet has had more impact on businesses and government than any technology advancement we've ever done. And now we're on the cusp of what we call, you can call it the next generation of the internet, you can call it digitization, you can call it the internet of everything. But as technology combines with process change, with innovation, it truly, for the first time, has the potential to change the world. I was deeply honored when I was asked to be chairman of the United States-India Business Council. And while I was tremendously humbled by that, my first reaction was, is this what I want to do at this point in my life? And then I thought how wrong that was. Because what we do at Cisco, while we're a far from perfect company, we get transitions right. And there are three huge transitions going on in the world at the present time. The first is one that really this technology will enable every company to become a technology company in ways that many of my peers will probably talk about tonight.
The second is the business models and the skill sets needed for this new economy are changing with tremendous speed. And you have to be able to change education in a country. You have to be able to adjust to the business models, the regulations which allow that to occur. And the third, whether it's in a city, a company, or a country, you have to have a visionary leader who surrounds themselves with a team that can execute with tremendous speed. And when I thought about that, to be a small part of that as chairman of the U.S.-India Business Council, it was something I could not resist, because I believe you will change the world and change India. For those of you who are doubters and say this is a vision and it won't happen, I want you to go back to the information age, which literally occurred from 1990 to 2010. And President Clinton, even though he came from a different political party than mine, he envisioned a strategy that could change a country and then the world. And during his 8 years of leadership, 22 million jobs, 18% growth in GDP, 17% growth in real per capita income by the average person in America. This will be an instant replay, except it will be 5 to 10 times the size. And it's the exact same principles that really drive it through. Our cut on this just 5 years ago was $19 trillion, the size of the U.S. economy in a decade. That's 1 to 3% growth of every country in the world GDP-wise, ongoing for a decade. But it now looks like that number is going to be too conservative. And when you travel around the world, Mr. Prime Minister, you had the vision ahead of many of your peers. But when you talk to Chancellor Merkel in Germany, or Cameron in the UK, or Hollande in France, or Renzi in Italy, the leaders there understand that every country has the potential to go 1 to 3% in GDP. They have the chance to generate a large number of jobs, but for the first time for them to be inclusive jobs for everyone in the country, regardless of age or geographic location. It will change healthcare and education in a way we're just beginning to dream. It will usher in a new generation of startups and capabilities that truly will make an innovative India and an innovative world. It will be able to do so at the same time of addressing the challenges such as our environment. And so now you see a race for who's going to move the fastest, who's going to have the courage to move with that type of capability, and the willingness not just to do the technology, which will be the easy part, but the process and the organization and structure changes to do the innovation. If you look to the Prime Minister's vision and you begin to think what is possible in terms of what I just talked about, it is amazing how quickly that can occur. Now I'm going to say something that will make a lot of businesses in this room uncomfortable. Whether you're in the US or India or Europe, 40% of us won't be around in 10 years. This is a period whether you better disrupt or you're going to be disrupted. True of companies regardless of the size of countries. And you've got to have the courage to go knowing there'll be bumps along the way. So when you look at Prime Minister Modi's vision of a digital India, a manufacturer in India using this inflection point that is occurring, what we do very well at Cisco is see that inflection point occur, and you compete not against other countries or other companies, you compete against your ability to innovate and the ability to skill in India, not 1 million jobs a year, but 1 million jobs new incremental a month. Think about how this gives you the vehicle with digital manufacturing that would not have been there before to make in India. 100 smart cities, 240,000 villages. Your vision, I believe, will happen. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण सैन जोसे से, जहां एक डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डिजिटल इंडिया एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी डिनर चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा जो प्रमुख आईटी कंपनियां हैं उनके दिग्गज जो है वो और जो तमाम प्रमुख हैं उनके वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। कई मायनों से महत्वपूर्ण है ये बैठक और आईटी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नया इनोवेशन क्या कुछ हो सकता है और विचारों का आदान प्रदान यहाँ पर इस बैठक, इस डिनर मीटिंग के दौरान चल रहा है। और इस प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा और सिलिकॉन वैली में जो उनकी यात्रा चल रही है उसमें क्या कुछ हासिल हो रहा है, वहाँ से क्या कुछ निकल कर आ रहा है, इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व
सचिव हमारे साथ मौजूद है ईस्ट के श्री BS प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री की जो सिलिकॉन वैली की यात्रा है, ये इतने दशकों के बाद, 3 दशकों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण है और क्या कुछ हासिल होगा वहाँ से, क्या कुछ लेकर आएंगे प्रधानमंत्री? ये बहुत महत्वपूर्ण है ये विज़िट। ये 2 दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक तो ये है कि ये टेक्नोलॉजी भारत का विकास के लिए क्या क्या कैसे उपलब्ध करेंगे, टेक्नोलॉजी का क्या स्थान है ये तो हम जानते हैं, बट ये जो टेक्नोलॉजीज़ है ये न्यू फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़, इसमें क्लीन एनर्जी बहुत महत्वपूर्ण है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ इसके बारे में हमने अभी सुना, स्मार्ट सिटीज़। सो टेक्नोलॉजी इन टर्म्स ऑफ सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए या ऑर्डिनरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बात तो है, बट उससे ज़्यादा ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ है, जैसे प्रधानमंत्री ने टेस्ला कंपनी में गए थे, वो ऑटोज़ में नहीं इंटरेस्टेड थे, बट वो इंटरेस्टेड थे सोलर टेक्नोलॉजी में। तो ये जो नए टेक्नोलॉजीज़ जो इनोवेशन हो रहा है और नया रिसर्च हो रहा है सिलिकॉन वैली, वो भारत का विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये तो एक दृष्टिकोण। दूसरा ये है कि सिलिकॉन वैली में इतना जो इंडियंस है 1.5 मिलियन, 15 लाख से ज़्यादा, और ये मैं मानता हूँ कि वेरी अकम्प्लिश्ड इंडियंस, अगर एजुकेशन से तरीके देखिए या सक्सेस, सत्या नडेला, सुंदर पिचौरी, दिस आर ऑल हाउस होल्ड नेम्स इन इंडिया, गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, दिस आर ऑल हाउस होल्ड। प्रकाश जी, आपको 1 मिनट इंटरप्ट करेंगे, हम एक बार फिर रुक करते हैं इस कार्यक्रम का, जहां पर डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का, जहां पर माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख सत्य नडेला इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। Explore concepts across economy, culture, geography. It's pretty amazing. That little anecdote speaks directly to our mission at Microsoft. We want to empower every person and every organization on the planet to achieve more. We believe that technology can be a powerful tool that enables human ingenuity to flourish. We want to help people make things and make things happen. The Indian school participating in the Skype classroom session is a great example of that. It is a school in the Srikakulam district of Andhra Pradesh. We worked with the Indian Research Education Network to bring low-cost broadband connectivity using TV white space technology to that rural school. We're now working to pilot the same in Varanasi. And our plan is to partner with the Government of India, the state governments, the telecommunications company, and the local ISPs to take this technology to 500,000 villages in India. We believe low-cost broadband connectivity coupled with the scale of the cloud computing and the intelligence that can be harnessed from data can help drive creativity, efficiency, and productivity across governments and businesses of all sizes. This in turn will drive more affordable products, services, and access to opportunity for all of India. To that end, next week, we're going to announce the availability of our cloud services operating out of India data centers. This is a big milestone and a key part of both Make in India and Digital India. Bringing world-class infrastructure to India, respecting India's digital security, sovereignty, and privacy is a key milestone for us. The benefits of cloud technology are broad. In fact, in education, and another example that the government of Andhra Pradesh to build machine learning models using all of the enrollment data coming out of schools so that they can detect the dropout rates and harness the scarce state resources to really impact the schools that need it most, the students that need it most. We're already working with the governments of Tamil Nadu, Maharashtra, and many more in broad variety of applications to bring that next level of efficiency and productivity to government services. We're enabling smart cities. In fact, the Prime Minister referenced Surat before when we were talking privately. In Surat, using our City Next framework,
we are working with local authorities to make data and analytics available for both the workers, the municipality of Surat, as well as the citizens of Surat, so that they can make smarter decisions as it relates to their education, their energy, and logistics. We are partnering with LV Prasad Eye Institute that has already served over 20 million Indians to bring more affordable care and better post-operative care using data and the cloud infrastructure. The cloud is benefiting businesses of all sizes, and I was amazed to see the number of small businesses that are able to take advantage of it. Essent Yarns in Ahmedabad, Bakewell Biscuits in a remote village in Gujarat, Electrosteel in Kolkata, Fortis Healthcare, or a high-growth startup like Zoomcar or Plus Text. All organizations using technology to amplify their ingenuity and make things happen. I want to end, though, by sharing a very personal story. In my early childhood, in a very remote district of India, one afternoon, I saw two photographs that haunt me still. I saw pictures of two people who were laying overturned on charpais with two transistor radios, Philips transistor radios next to them. In subsequent years, I came to understand much more about these two people. What I saw that day were two photographs of dead revolutionaries. The year was 1970, and the district was Srikakulam. They were school teachers who decided to leave teaching. I think about their lives and lives of others who have followed similar paths. I think about what those people could have achieved with the true empowerment of technology and other resources. All of this leads me to think about the future. What opportunity can we unlock? What change can we spark? What student can we inspire to reach new potential and help shape a better world? Since 1970, our technology, economy, and society have progressed in tandem. In 2015, it's clear to me that now is the time for us collectively to come together and empower people all over the world, from Nanyuki to Srikakulam to East Palo Alto, to make their hopes a reality. Thank you very, very much. An inspiring story about opportunity. One of the unique things about Silicon Valley is that they're engineers and technologists running companies. With more than 50 patents in the wireless industry to his credit, Paul Jacobs is an engineer's engineer. But as the executive chairman and chairman of the board at Qualcomm, Paul is now guiding. तो आप देख रहे थे सीधा कार्यक्रम सैन जोस से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर, और आपने देखा कि सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख हैं उनका उनका भाषण आपने सुना, और वो क्लाउड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, लो कॉस्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की बात कर रहे थे, और तमाम सारे विजन्स उन्होंने शेयर किए। फ़िलहाल हम यहाँ पर BS प्रकाश जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। हम चर्चा कर रहे थे इन्हीं बैठकों पर, और सिलिकॉन वैली में जो कुछ चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद है और बहुत उत्साह भी है, और इस बात को भी लेकर के सबकी नजरें हैं कि आखिर क्या कुछ निकल कर आता है वहां से। जब हम सिलिकॉन वैली का बात करेंगे और टेक्नोलॉजीज़ का बात करते हैं, ये बताना ज़रूरी है कि जो भी सबसे बड़े कंपनी है सिलिकॉन वैली में, वो ऑलरेडी इंडिया में है। इंटेल, गूगल, एप्पल, क्वालकॉम की बात हुई अभी, और ह्यूलेट पैकर्ड, HP, सब इंडिया में ऑलरेडी है। और हम जानते हैं बेंगलुरु में, हैदराबाद में, चंडीगढ़ में काफ़ी काम कर रहे हैं, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट भी दिए हैं। सो इट इज़ एन एग्जिस्टिंग एंड एनर्जेटिक कनेक्शन जी। सो इसलिए कोई शक नहीं होना चाहिए कि कुछ निकलेगा या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अचीवमेंट्स हो चुका है। और हमारे इंडिया में भी आजकल स्टार्टअप कंपनीज है,
आप देख सकते हैं कि स्टार्टअप है, वेंचर कैपिटल, ये सब जो सिलिकॉन वैली का हैबिटाट कहा जाता है, वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल कैपिटल, ब्रांडिंग, इनोवेशन, ये सब हमारे यहाँ भी थोड़ी मात्रा पे हो रहा है। और अब जो बात चल रही है, प्राइम मिनिस्टर ने पहले जैसे हमने देखा टेस्ला में गए थे क्लीन एनर्जी के बारे में, एप्पल सिर्फ आईटी का बात नहीं, एप्पल तो बड़े बड़े उनके प्रोजेक्ट्स हैं, और गूगल तो ड्राइवरलेस कार बनाना चाहते हैं। पूरा दुनिया का जो भी ज्ञान है उसको एक जगह पर रखने का उनका संकल्प है, उनके पास सामर्थ्य भी है, ये भी है। सो ये जो फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे स्मार्ट सिटीज़ की बात हुई, ये सब करने का उम्मीद है, और मुझे लगता है कि इसका शुरुआत हो चुका है और आगे भी बढ़ेगा। जी, आपने फ्रंटियर टेक्नोलॉजी की बात कही, नई तकनीक, नई रिसर्च, क्लीन टेक्नोलॉजी की बात कही। कितना महत्वपूर्ण है ये आईटी दिग्गज के साथ ये जो मीटिंग्स हो रही हैं, जो उनके साथ 1-to-1 जो मुलाकात भी हो रही है, उसको लेकर के कितना महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ सजेशंस होंगे? और जैसा कि आपने बताया कि ये सारी कंपनियां पहले ही मौजूद हैं, क्या कुछ और उसमें एक नया आयाम क्या जुड़ेगा? एक अच्छा प्रश्न है। हम एक व्यक्ति का बात करेंगे पहले, बिल गेट्स का। जैसे हम सब लोग जानते हैं बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का प्रेसिडेंट था, बट छोड़ दिया। बट बिल गेट्स एक दूसरी डायमेंशन में एज ए फिलॉन्थ्रोपिस्ट, एज समबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन एराडिकेटिंग मलेरिया या और कोई डिसीज़ है उसको एराडिकेट करने में, एजुकेशन में कितना काम कर चुका है, और इंडिया में कितना इंटरेस्ट है, कितने बार इंडिया आ रहे हैं, बोथ बिल एंड मेलिंडा गेट्स। और आजकल बिल एंड मेलिंडा गेट्स का फाउंडेशन से दुनिया में, इंडिया में, अफ्रीका में कितना काम हो रहा है। सिमिलरली सत्या नडेला स्पोक वेरी एलोक्वेंटली, वेरी इंस्पायरिंग वर्ड्स। उन्होंने कहा कि उसका ड्रीम ये है कि इंडिया में गांव-गांव में जो पोटेंशियल है आई क्लाउड का यूज़ करने का, नॉट आई क्लाउड, क्लाउड को यूज़ करने का, और दूसरे जो टेक्नोलॉजीज़ है उससे कैसे चेंजेस बदल। सो ये जो लोग हैं, जैसे आपने कहा आईटी का बहुत इम्पोर्टेंट लोग, उनका देखिए सिर्फ इंडिया, चाइना और 4-5 देशों में उनको ये स्केल मिल सकता है, जी, परिवर्तन का साधन। जिस तरह से सत्य नडेला जी की बात कही कि उन्होंने एक इंस्पायरिंग स्पीच हमें देखने को मिली, हम एक बार फिर रुक करते हैं वॉलकॉन कंपनी के स्टीवन वॉलनकॉफ जो है वहाँ पर प्रमुख हैं, उनकी स्पीच है, आइए सीधे सुनते हैं। Tremendous and ever-growing demand for mobile broadband, and one of the things I'm very proud of is that we've already seen the launch of 4G technology. Much faster speeds at the same kind of pricing that we've seen 3G, and it's quite inexpensive. One phenomenal statistic, talking about being an engineer, I have to talk about numbers, of course. So we see that today there are 121 million mobile broadband users in India, and that far outnumbers the wireline broadband base of 15 million users. And now we're seeing smartphones that are coming down in the very low prices, from the 10,000 rupee for the mid-tier, $150 kind of range, down to the 5,000 rupee type range. And that is making smartphones affordable. And we were able to do this with feature phones before, but what's amazing is to be able to do that now with a smartphone. And I think that's what sets up India so well for a continuing and really a blossoming of this mobile revolution. Now the market is going to be absolutely tremendous. There's predictions of the market growing from 82 million units of smartphones in 2014 to 252 million units in 2020. So that is an obvious market that everybody sees as being something that's tremendous, and it will create an awful lot of economic opportunity for companies both inside and outside of India. But the thing that I find really fascinating about the potential for India is that India already has more internet traffic on mobile devices at 65% than most other countries. In fact, maybe the leading country. And in fact, there's been studies now looking at how Indian consumers value having mobile broadband, and they valued it at
45% of their nominal GDP per capita. So that's a tremendous stat that people are willing to put so much of their own income on that. And so now we're seeing that Indians are signing up for services very rapidly, 52 million people in 2014, and that makes India the second largest telecom market in Asia. And we are seeing now that telecom is penetrating farther and farther into rural areas and connecting up people. तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण सैन जोस से। स्टीवन वॉलकॉफ वॉलकॉम कंपनी के प्रमुख हैं। जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि भारत में के लोगों में बहुत पोटेंशियल है और उसको और हासिल करने की ज़रूरत है, सपनों को सच करने की ज़रूरत है। हमारे साथ BS प्रकाश जी हैं, सचिव ईस्ट रहे हैं, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा कि एक के बाद एक दिग्गज जो प्रमुख हैं वो आ रहे हैं और उनको लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है। भारत और अमेरिका अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मिलकर अपने सपने सच करने की बात कर रहे हैं। ऐसा आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। ये तो इट्स एन ऑब्जेक्टिव फैक्ट कि दुनिया में अगर बड़े बड़े कंपनीज़ के लिए, इनोवेटर्स के लिए, प्रोडक्ट्स के लिए हम मार्केट्स के बारे में सोचेंगे तो मार्केट कई देशों में तो सैचुरेट हो चुका है और चाइना में भी सिर्फ चाइना का तुलन हम कर सकते हैं क्योंकि मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन विश्व में 2 ही राष्ट्र है तो कंपेयर कर सकते हैं। बट चाइना में भी मिडिल क्लास को ये सब मिल चुका है। जैसे अभी उन्होंने कहा इफ़ यू लुक एट इंटरनेट यूसेज या मोबाइल यूसेज, इतना पोटेंशियल भारत में अभी तक बाकी है। और इफ़ यू लुक एट कार्स फॉर इंस्टेंस, जो भी आप लेंगे वी हैव इस ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल, एस्पिरेशंस। सो इसलिए सब लोगों को प्योरली कमर्शियली प्रॉफिट के दृष्टिकोण से हम अगर देखेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है और हमारे लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है कि लोगों का जो एस्पिरेशंस है वो फुलफ़िल करें। पहले तो आपको पता नहीं होगा क्योंकि उस ज़माना में चुका है तो सो डिफ़िकल्ट टू गेट ए फ़ोन, बट आजकल कोई किसी को लैंडलाइन नहीं चाहिए, सीधा मोबाइल पे जाते हैं ना। तो ये पहले तो एक फ़ोन घर में होना ही एस्पिरेशन था, वो ज़माना तो गया। अब तो मोबाइल सबके पास है, अब 3G से 4G परिवर्तन हो रहा है इंडिया में। सो दिस इज़ ए ग्रोइंग कर्व where India can benefit from these, and the markets and the big companies in the US can also benefit from the market potential. जी बिल्कुल, हम सपनों को सच करने की बात कर रहे थे। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो तकनीक और जो एक इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की जो बात हो रही है उससे एक कदम आगे बढ़ करके कि नई तकनीक की, नई रिसर्च की, क्लीन एनर्जी की, इसकी बात हो रही है और इस पे कितने अभी जिसको कहना चाहिए कि कितना आगे आए हैं और ये यात्रा हमें और कितनी आगे ले जाएगी, इस संदर्भ में भी देखा जाना जरूरी है। बिल्कुल, ग्रीन एनर्जी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल फ्रॉम इंडियाज़ पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो एनवायरनमेंट का ज़रूर दृष्टिकोण हमने रखना चाहिए और विश्व के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास जो भी है तो क्लीन एनर्जीज़ उसको हम देखना पड़ेगा। बट और भी चीज़ें हैं जी, एक तो फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक्नोलॉजी एट द लेवल ऑफ जेनेटिक्स में क्या क्या चेंजेस हो रहा है, नैनो टेक्नोलॉजी, बहुत स्मॉल परमाणु जैसे स्केल का जो चीज़ होता है उसमें कैसे परिवर्तन करेंगे, उसका कैसे चेंज करेंगे। ये नैनो टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन वैली में रिसर्च होता है, इंडिया के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से बात तो हम कर चुके हैं, डिजिटल इंडिया के बात कर चुके हैं। सो इसलिए अगर इंडिया का विकास का रास्ते में टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने से एक नया रास्ता मिलेगा, इसीलिए बाकी लोगों को भी एक अपॉर्चुनिटी है। हमारे लिए यही रास्ता है। वी कैन नॉट फॉलो द पाथ ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन बाय कंजम्पशन दैट अदर्स हैव फॉलोड। जी अच्छा, वहाँ जैसा कि आपने कहा कि 15 लाख भारतीय हैं, किस तरह से वेस्ट कोस्ट में, जी वेस्ट कोस्ट पे हम सिलिकॉन वैली की बात कर रहे हैं। आप वहाँ पर काउंसलेट जनरल भी रहे हैं तो आप शायद उस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। किस तरह से उस प्रतिभा को हम यहाँ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? कई बार ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं और हमेशा इस तरह की बातें होती हैं कि सिलिकॉन वैली में हमारे कितने प्रतिभाशाली लोग हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि उन प्रतिभाशाली लोगों की जो प्रतिभा है वो चाहे वहाँ ही रहें लेकिन उसको हम यहाँ भी उसको यूज़ कर सकें। बिल्कुल, देखिए जैसे मेरा एक्सपीरियंस तो ये था,
और आजकल तो और भी ज़्यादा बड़ा होगा। ये जो भी है, जैसे सत्या नडेला है, सुंदर पिचौरी है, ये हमेशा बोलते हैं और उनको याद है कि मैं जो भी बना हूँ तो मेरा टीचर्स से मुझे बहुत हेल्प मिला, स्कूल में, आईआईटी में, मैनेजमेंट में। सो अमेरिका जाने के पहले मेरा पेरेंट्स कितना सैक्रिफाइस किया, मेरा टीचर्स कितना उत्साह दिया, ये सब वो याद करते हैं और वो बोलते हैं हम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। सो पहले से भी एक ये सोच उधर है कि हम कुछ कर सकते हैं इंडिया के लिए। मेरे गांव में, मेरे स्कूल में, मेरे आईआईटी में, और काफ़ी लोग कर भी चुके हैं। देयर इज़ एन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इन आईआईटी बॉम्बे, कंप्लीटली फंडेड, जो सिलिकॉन वैली में कोई रहते हैं, और देयर आर सेवरल अदर इनिशिएटिव्स। और अब हमने सुना, देखा कि सत्या नडेला बात कर रहे थे, आंध्र प्रदेश में हम स्कूल में ये करके दिखाना चाहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट का टेक्नोलॉजी लेके। तो ये कनेक्शन है। और अभी प्राइम मिनिस्टर का बाकी प्रोग्राम जो है उसमें हम देखेंगे एक प्रोग्राम कॉल्ड कनेक्ट, KONNECT, कनेक्ट है। इसमें हमारे जो नासकॉम है, हमारा जो इंडस्ट्री लीडर, और एक द इंडस एंटरप्रेनर्स कहलाता है, द टाई, ये तो सिर्फ भारतीय हैं, वो जो सिलिकॉन वैली में ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। सो जब जो आपने जिक्र किया कि ये लोग इंडिया के लिए क्या कर सकते, करना चाहते हैं, तो इसका एक अपॉर्चुनिटी, एक ब्रिज बिटवीन इंडियाज़ डिज़ायर्स एंड देयर कैपेबिलिटीज़, ये ब्रिज बनने का ये तो काम है हमारा, एम्बेसीज का, काउंसुलेट्स का और गवर्नमेंट का। क्योंकि अगर कोई बहुत फेमस डॉक्टर है, वो कहता है मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, बट वर्ष में 1 हफ्ते 2 हफ्ते मैं इंडिया में काम करना चाहता हूँ, मेरा पास जो नॉलेज है मैं देना चाहता हूँ, उसके लिए हमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहिए। जी, निश्चित तौर पर। और प्रधानमंत्री भी इस बात को कई बार कह चुके हैं, जब वो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि अब भारत में तस्वीर जो है वो बदल चुकी है और तमाम चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। रेड टेप नहीं, अब रेड कारपेट है। तो इस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट को अगर जोड़े, जिस तरह की बात प्रधानमंत्री जी कहते रहे हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसके अलावा डिजिटल इंडिया की बात करते रहे, ये जो दौरा है सिलिकॉन वैली का, उसको कितना बल मिलेगा? ये जैसे हमने डिस्कस किया था, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईस्ट कोस्ट में जब प्राइम मिनिस्टर कल न्यूयॉर्क में थे या वॉशिंगटन में जाएंगे, न्यूयॉर्क प्रमुख तरह, उधर है अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट, बैंकर्स हैं वहाँ, बहुत हेज फंड के लोग हैं, और ये जो ऐसी चीज़ जो होता है, बड़े बड़े कंपनीज जो फाइनेंस सेक्टर में है, वो न्यूयॉर्क में ज़्यादा है। और सिलिकॉन वैली का ये यूनिक आइडेंटिटी है कि सब लोग उधर टेक्नोलॉजी में फोकस करते हैं, और यंग लोग हैं, इनफॉर्मल है, वो करना बीएस प्रकाश जी, हम आपको 1 मिनट रोकेंगे। इस वक्त सुंदर पिचाई जो गूगल के प्रमुख हैं वो संबोधित कर रहे हैं, सीधे उनको सुनते हैं। More importantly, he understands that technology is an enabler to drive change at a massive scale, the kind of scale that India needs. Today, there are plenty of people in India who have smartphones and access to the web. It's almost surreal for me to step back and internalize all of this. Growing up, I still remember when my family, after many years of waiting, we were one of the few lucky families to get a rotary phone. It was a big event in our neighborhood. People all came to our home, and I personally dialed the number 9 as many times as I could, and it allowed us to connect with friends. I literally saw how it changed our lives. Fast forward to today, there are more than 300 million users who have access to the internet and smartphones. And India is the fastest growing country in the entire world in the rate at which it's adding internet users. It's not just being online, it's what do you do when you get online. People are educating themselves, they're connecting with loved ones, they're creating and sharing videos. For example, in YouTube, there are many homemakers in India who make a living by posting cooking videos online. Our largest YouTube creator, the most popular YouTube creator in India, is Nisha Madhulika, who has millions of followers making vegetarian recipes in Hindi on YouTube. People are starting businesses too. In Chandigarh, a one-man retailer
was selling water pumps, and he decided to take his business online, and he's the largest retailer of water pumps in Maharashtra and Tamil Nadu. These stories are not unique. They are happening all over the country, and they happen every day. I was in India last year, and I had a chance to speak to entrepreneurs as part of a NASSCOM 10,000 Startups initiative. I could feel the change in the air. I met hungry entrepreneurs, the same kind of entrepreneurs I meet in the Valley. The combination of that, their motivation, and Indians coming online at an unprecedented scale, it was very clear to me that this is once-in-a-lifetime opportunity. And the evidence is there all around us. There are more than 3,000 startups in India. By many metrics, India is the fastest growing startup nation in the world. Companies like Flipkart, Hike, Quicker, Zomato, Snapdeal, these are all evidence of this happening all around us. They are not just Indian success stories, they are global success stories, and they'll create thousands of jobs. We at Google are proud of what's happening in India, and we share the Prime Minister's vision for a digital India. We want to play our part. There are two main things, computing and connectivity, which are foundations for a digital India. On computing, we already have the two of the most open and large platforms in the world today with Android and Chrome. Android powers over 9 out of every 10 smartphones in India, and in many ways is powering the smartphone revolution over there. Last year, we launched Android One because we care about everyone having a smartphone. We want affordable, high-quality, entry-level smartphones. We also care about making Android available in many more languages. Android is today available in many Indic languages, but we know to push digital literacy forward, it's really important for people to be able to type in their native languages. So next month, we'll make it possible for people to type in over 10 Indic languages in India, including Prime Minister's mother tongue, Gujarati. We are bringing Chromebooks to schools throughout the country, giving kids access to more information. And finally, we are working on many connectivity projects, including an important announcement in terms of bringing connectivity to railway stations throughout India, which we'll announce with Prime Minister Modi tomorrow at Google. All of this goes to the heart of why our company exists, giving access to information and knowledge to more people. It's the core mission of Google. And more than almost anywhere else, India has the innovative spirit that lies in our DNA, and it's doing great things with it. It's that spirit that drives everyone here, and like everyone, I'm excited to see India's future. Very excited to work together with the Prime Minister to make that happen, and thank you all.